Ladies and gentlemen, welcome to ifactner's Learn to Write in Urdu through English video tutorial. In this video tutorial, we will learn to write Urdu sentences of a conversation between a waiter and a customer at a restaurant. Let's start our tutorial. Now, the waiter asks, "Are you ready to order?" And we can translate it in Urdu as क्या आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? क्या आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? Now let's learn how do we write this sentence in Urdu language. First we need to write क्या, and to write क्या we write the first part of kaf and then ye and then alif, and we complete kaf and put two dots under ye. It becomes kya. Aap is you, and we write aap with alif mad a because we need to make a longer sound, and alif mad a and pe sakin. You make a boat-like structure and put three dots under it. It's pe. Alif mada pe. Aap. Order. Order is alif mad a, re, dal. Half moon with a special character on it. Order and then re. Kya aap order? K can be written as, first you need to write badiye and then complete the part of kaf. Order ke. Liye can be written as lam, then chotiye and badiye. Put two dots for chotiye, so it becomes liye. Kya aap order ke liye tayyar is one part for te, this part for chotiye and alif and re. Tayyar. Hai can be written as he, ye, noona. So you notice that we write Urdu from left to right, and in the end question mark. क्या आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? Let's move forward. The next sentence is, the customer says, "Please come back in 5 minutes." Translation: मेहरबानी करके 5 मिनट में वापस आएं. मेहरबानी करके 5 मिनट में वापस आएं. Now let's learn to write this sentence in Urdu language, which is मेहरबानी करके 5 मिनट में वापस आएं. To write meme, we just take its first part, meme. Then we write he like this and re like this. Put this special character under he, so it becomes meher. Bani can be spelled as be alif noon choti ye. Be alif ba noon choti ye ni. Meher bani. So be alif and noon choti ye. मेहरबानी. मेहरबानी करके, काफरे कर, काफ बड़िए के, करके. मेहरबानी करके 5. 5 can be written as pe alif pa and then noon che. 5. Minute is meme, noon and te. Put one dot on top of noon and this special character on te. मेहरबानी करके 5 मिनट में मीम ये एंड नूना. 5 मिनट में वापस. वाव अलिफ वा पे सीन वापस. आए अलिफ मदा हमजा
ye and नूना। मेहरबानी करके 5 मिनट में वापस आएं। The next sentence is the waiter says, I will be back in 5 minutes, which can be translated in Urdu as मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। Waiter is a male, therefore he says आता. And if she is a female, then she will say मैं 5 मिनट में वापस आती. So instead of आता, we will say आता, आती हूँ. मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ. So you can see मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ. Now let's see how do we write it in Urdu. So we will say मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ. मैं, मीम, ये and नूना. मैं 5 पे अलिफ नून चे 5 minute. Meme noon min. This is meme. Then noon and te. Minute. 5 minute में. Meme ये नूना. 5. This is मैं, and you can notice that we write मैं and may in the same way, but this is meme मैं. Meme zabar ye noona मैं, and this is may. मैं means I and may means in. मैं 5 मिनट में वापस वाव अलिफ पेसीन वापस अलिफ मदा ते अलिफ ता आता. And for female we will say आती अलिफ मदा ते छोटी ती आती हूँ. हे वाव नूना. मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ for male and मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ for female. Now the waiter returns and the customer says, I would like to order fish and chips, which can be translated in Urdu as मैं मछली और चिप्स ऑर्डर करना चाहूँगा. Male version and female version will be मैं मछली और चिप्स ऑर्डर करना चाहूँगी. So instead of ga we will say gi for female. Now let's see how do we write it in Urdu. So in Urdu we will start with मैं मछली और चिप्स ऑर्डर करना चाहूँगा. So first we will write meme and then ye and then नूना. मैं मछली मीम चे हे. So we use दो चश्मी है, which is this to make the aspirated sound. मीम छे हे लाम छोटी है मछली और अलिफ वाव रे और. Chips is चे पे and seen. Chips. 3 dots for चे and 3 dots for पे. Chips. मैं मछली और चिप्स ऑर्डर अलिफ मद आ रे डाल रे ऑर्डर करना काफरे कर नून अलिफ ना करना. एंड चाहूँगा इस चे अलिफ चा हे वाव नूना चाहूँगा for male और गी for female. मैं मछली और चिप्स ऑर्डर करना चाहूँगा. Now the waiter says, what would you like as a starter? आप
स्टार्टर में क्या लेना चाहेंगे? क्वेश्चन मार्क। आप स्टार्टर में क्या लेना चाहेंगे? एंड इफ ही आस्किंग फ्रॉम अ फीमेल देन ही विल आस्क आप स्टार्टर में क्या लेना चाहेंगी? गे for male and gi for female. Now let's see how do we write this sentence in Urdu. So we will start with alif madha and pe sakin. Aap, starter. Seen, te alif star, star. Seen te alif re, start और टर, टेरे टर, स्टार्टर। आप स्टार्टर में, मीम ये नूना, क्या, काफ ये अलिफ, क्या, लेना, लाम ये नून अलिफ ना, लेना। आप स्टार्टर में क्या लेना? चे अलिफ चा, हे ये नूना, चाहेंगे फॉर मेल एंड घी फॉर फीमेल। आप स्टार्टर में क्या लेना चाहेंगे और आप स्टार्टर में क्या लेना चाहेंगी फॉर फीमेल? नाउ द कस्टमर सेज आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ सूप विच कैन बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगा। सो इट्स का, मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगा। नाउ लेट्स सी इफ शी इज़ अ फीमेल देन शी विल से मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगी। लेट्स राइट इट डाउन इन उर्दू। मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगा, मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगी। वी विल स्टार्ट विद मीम ये नूना, मैं, सूप, सीन वाव पे, सूप, का, काफ अलिफ का, प्याला, पे ये अलिफ, लाम हेला, प्याला, लेना, लाम ये नून अलिफ ना, लेना, चाहूँगा, चे अलिफ चा, हे वाव नूना, चाहूँ, एंड गाफ और मेल, गाफ अलिफ का और गाफ छोटी है गी, एंड इन देन वी मे use hyphen instead of a dot. So here we write मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगा, मैं सूप का प्याला लेना चाहूँगी। Now the waiter asks, and in the desserts, और मीठे में, और मीठे में। Let's write और मीठे में। So we will say और अलिफ वाव रे, और मीठे, मीम ये एंड ट्रे है की बनी ठे, मीठे में, मीम ये नूना, और मीठे में, और मीठे में। So we will write te like this. You just need to add another connector for te, so it should be like this, meethe. Let me write it one more time. Alif वाव रे, और मीम ये टे है की बनी थे, मीठे। So we write मीठे like this, में, मीम ये नूना, और मीठे में। Now the customer says, I want a ball of ice cream
which can be translated in Urdu as मुझे आइसक्रीम का प्याला चाहिए. मुझे आइसक्रीम का प्याला चाहिए या मैं आइसक्रीम का प्याला लेना चाहूँगा. Both are correct. So now let's see how do we translate this or write this sentence in Urdu. मैं मीम ये नूना आइसक्रीम अलिफ मदा हमजा ये सीन आइस करीम काफ रे ये मीम आइसक्रीम का काफ अलिफ का प्याला पे ये अलिफ लामेला प्याला लेना लाम ये नून अलिफ ना लेना चाहूँगा फॉर मेल चे अलिफ चा हे वाव नूना चाहूँगा गाफ अलिफ का फॉर मेल एंड गाफ छोटी है गी फॉर फीमेल. मैं आइसक्रीम का प्याला लेना चाहूँगा. Now, the next sentence of the conversation is anything else, sir? So, if the customer is male, then anything else, sir? Kuch aur, sir? And if she is a female, then kuch aur, madam? Kuch aur, sir? Kuch aur, madam? Now, let's see. कुछ और सर कुछ और मैडम. How do we write it? कुछ काफ चे हे कुछ और अलिफ वाव रे और सर and in the end question mark. Let's write one more time. Kuch kaaf che he kuch और sir seen re sir कुछ और sir. So here we have written कुछ और sir. Now, the customer answers, no, that would be all. Thanks. नहीं ये सब होगा शुक्रिया. नहीं ये सब होगा शुक्रिया. Now let's see how do we write नहीं ये सब होगा शुक्रिया. So we will say नहीं नून है ये नूना ये है ये सब सीन बे सब हो हेवा हो गाफ अलिफ का नहीं ये सब होगा. And we can write शुक्रिया as शीन काफ रे ये है या. Put 3 dots for शीन शुक्रिया. नहीं ये सब होगा शुक्रिया. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. I will see you in the next tutorial. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.